Hello friends, I am Anand Panchbhai. I am going to record my video. Hello friends, I am Anand Panchbhai and we are going to deal with the fourth illustration. Third thai also na? Let's deal with the fourth illustration. The equation for a wave traveling in x direction on a string is y is equal to 3 sine 3.14x minus 314 into t, where x is in centimeter. Who is discussing? बोला है ना? You are not supposed to speak a word. Fine? Yeah. So y is equal to this we have got, and okay, x is in centimeter, and t is in second. Find the maximum velocity of the particle. Maximum velocity of the particle is equal to a omega. A is given by 3, omega is nothing but 314. So we got 3 multiplied by 314. Is it clear? So we've got maximum velocity centimeter per second. Fine. So this is 942 centimeter per second. So this is my Vmax. Clear? Then after the second question is like this. We have to find out the acceleration of the particle. We have to find out the acceleration of the particle A at x is equal to 6 centimeter at t is equal to 0.11 second. Fine, this is what we have to do. So I can say that acceleration A is equal to omega square y. Fine, omega square 314. We know that this is k, this is x, this is omega, this is t. Fine, we know this. पता चल रहा है ना ये? Clear हो रहा है? Fine. So we can say that this is 314 square. Y is what? Y is 3 sine 3.14x minus 314t. Clear हुआ कि नहीं हुआ? So what is the value of x? 6 centimeter. What is the value of time? 0.11 second. So we can say that this is 314 the whole square multiplied by 3 into sine of, guys, 314 is what? Pi. So I can say that this is pi multiplied by 6 minus 314 is what? 100 multiplied by pi. 3.14 multiplied by 100 will give me 314. So I can say that this is 100 pi and this is t is equal to 0.11 second. So I'll be having this is equal to 314 the whole square multiplied by 3 sine of 6 pi minus 11 pi. Is it clear? So we have got value which is 314 the whole square multiplied by 3 sine of this is minus 5 pi. Find minus sine of minus theta is minus sine theta. So I'll be having minus 314 the whole square into 3 sine of 5 pi. Sine 5 pi becomes 0. Cause when we have unit circle, this is 0, this is pi, this is 2 pi, this is 3 pi, this is 4 pi, this is 5 pi. So this point sine is 0, cosine is minus 1. So we have got this value minus 314 the whole square multiplied by 3 into 0. So that is equal to 0. So 0 centimeter per second square will be my acceleration. Is it clear? Now let's deal with the next example. At 0 degree temperature, the source of sound of frequency 250 Hz emits sound waves at a wavelength of 1.32 meter. What would be the increase in the wavelength at 27 degree? कैसे करेंगे वेवलेंथ? कैसे क्या सेट होता है वेवलेंथ वाला? कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? If we know the velocity, we know the velocity as a function of temperature. Fine. We know that velocity is directly proportional to under root t. Yes or no? Yes or no? Velocity is proportional to under root t. We have derived it. कैसे आया था? V is equal to under root t by mu. V is equal to under root t by mu. This was the formula. याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? Fine. In a medium, when wave is traveling in a medium, the velocity is given by V is equal to under root t by mu. याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है इक्वेशन? फाइन, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर भी इतना सारा इलस्ट्रेशन लिख क्या है पता चलना चाहिए इतना.
So we have got V is proportional. We have space, good space over here. So let's utilize this. So V is proportional to under root T and V is equal to F lambda proportional to under root T. Up see, frequency will be constant because if temperature will change, what will happen? Medium density will change. Medium का density change होगा तो medium change हुआ. Medium change हुआ तो wavelength change होगा. Frequency is the property of a source, where lambda is the property of a medium. बराबर है ना? याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? I've told you this. Frequency is the property of the source. Source जो generate करता है वही frequency propagate होता है. बराबर? Fine. पर lambda is the property of that medium. Fine. Medium change होगा, lambda change हो जाएगा. Clear हो रहा है कि नहीं हो रहा है? So we understood that F is constant, so I'll be having lambda proportional to under root T. So lambda 1 proportional to under root T1 and lambda 2 proportional to under root T2. So we'll be having lambda 2 divided by lambda 1 is equal to under root T2 by T1. So lambda 2 is equal to under root T2 by T1 into lambda 1. Under root T2. T2 27 मतलब 300 Kelvin. Fine, this is 273. 0 degree माने 273 Kelvin. Fine, so we'll be having lambda. What is the value of lambda 1? 1.32. 1.32 मीटर. कितना आ रहा है? 1.38 मीटर. Clear हुआ? So this is my lambda 2. Done हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Done हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Fine. पता चल रहा है? किसी को डाउट? किसी को डाउट? Done. At what temperature the hydrogen gas will have the speed of sound waves in it will be equal to the speed of sound in oxygen at 1200 degrees centigrade. The density of oxygen is 16 times that of hydrogen. मतलब हाइड्रोजन वाला मीडियम है बगासा खा के और ऑक्सीजन वाला मीडियम है. हमारा डिफरेंस करो. हाँ तो difference in lambda 2 minus lambda 1 which is equal to 0.06. 1.38 minus 1.32 which is equal to 0.06 मीटर. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? ग्रेट, क्लियर, गुड. अभी क्या अपने पास हाइड्रोजन का एटमॉस्फेयर है, अपने पास ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर. समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? हाइड्रोजन का एटमॉस्फेयर है और ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर. अब हाइड्रोजन में जब वेव ट्रैवल कर रहा है तब कुछ उसका स्पीड होगा. ऑक्सीजन में 1200 डिग्री पे कोई वेव ट्रैवल कर रहा है तब उसका कुछ स्पीड होगा. अभी ऐसा बोला है, at what temperature the hydrogen gas will have the speed of sound wave in it will be equal to speed of sound wave in oxygen at 1200 degree centigrade. यानी वेलोसिटी जो साउंड का है वो हाइड्रोजन के अंदर कितने टेम्परेचर पे होगा which is equal to velocity of sound ऑक्सीजन के अंदर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर हो रहा है? फाइन. दिस इज द क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन. डन. फाइन. सो वी कैन से दैट वेलोसिटी अभी हमने ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था. याद आ रहा है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर वी स्टडीड अ फार्मूला. वी स्टडीड अ फार्मूला व्हिच वाज लाइक दिस. व्हिच वाज लाइक दिस. दैट आ रहा है ना? That the velocity is equal to under root. See, hydrogen is a diatomic molecule. Oxygen is also a diatomic molecule. So they are having 3 degrees of freedom. They are having 3 degrees of freedom. जिसको हम ईटा बोलते थे, कभी गामा बोलते थे, कभी कुछ भी बोलते थे, म्यू बोलते थे, कुछ भी बोलते थे. डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम gamma, fine, into RT divided by M0. This was the formula we people have derived over there. Fine, kinetic energy बगा सका कि we have derived it by using kinetic. Half mv square is equal to gamma RT. Fine, ऐसा कुछ 3 kBt से सब derive किया था हम लोगों ने इसको. बराबर है 8th chapter, first semester. Fine, okay. So we have got V is equal to this. But I have been given in data that density of oxygen is 16 times more than density of hydrogen. बराबर. तो डेंसिटी के साथ काम करना है तो मास को वॉल्यूम डेंसिटी में कन्वर्ट कर डाले. So velocity is equal to under root gamma
RT डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया उसका, बराबर, वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया इनटू डेंसिटी रो, बस. So we have got velocity which is equal to under root gamma RT, टेम्परेचर ना, ये मेरे को ढूंढने का है बेटा, मुझे ढूंढने का टेम्परेचर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू रो ऑफ हाइड्रोजन. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अल्लाह समझ पड़ रहा है? समझ पड़ रहा है सबको? फाइंड विच इज इक्वल टू अंडर रूट V0 tarital gamma RT. Now this T will be what? 1200 plus 1200 plus 273. समझ पड़ रहा है ये? Divided by what? Volume multiplied by rho of oxygen, density of oxygen. समझ पड़ रहा है ये? Fine. So we have got density of oxygen, density of hydrogen. Fine. So we will be having these terms cancelled out, and we have to find out T. One more relation is given over here. Find density of oxygen is 16 times more than density of hydrogen. So we can say that under root T, under root उड़ा दे under root को. So T is equal to rho ऊपर चला गया. So I'll be having 1200 plus 273 1473 divided by tarital into rho H divided by rho O. It is 16 times rho H. Cancel. So 1473 divided 16 comes out to be 92.062 केल्विन. तो इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे, 92.062 minus 273. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? कितना होगा वो? माइनस 181.08 डिग्री सेंटीग्रेड. So this will be the temperature. Clear हुआ कि नहीं हुआ? Next. समझ पड़ रहा है ना कि नहीं पड़ रहा है? पढ़ रहा है ना? The length of the sonometer wire between its fixed ends is 110 centimeter. Oh, सोनोमीटर वो लंबा है, बराबर, और या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 110. बट ये कौन सा था ये एग्जाम? ये अभी 7. चलो ध्यान, सोनोमीटर जो है उसका जो रूल है वो कितना है? 110. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? समझ पड़ा? ओके. अभी क्या बोला? हाँ, where should the two bridges S1 and S2 be placed in between the ends so as to divide the wire into 3 segments? अल्लाह, मैं 2 ब्रिजेस डाल देगा बीच में, पूछो तो एक सेगमेंट हुआ, दूसरा सेगमेंट हुआ, तीसरा सेगमेंट हुआ, हो गया कि नहीं हो गया? समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? ओके, बगा सा खा के डन. चलो, whose fundamental frequencies are f1 is to f2 is to f3 is equal to 1 is to 1 2 is to 3, बराबर. तो मुझे वो लेंथ ढूंढने का है. अल्लाह, वायर लेंथ मेरे को सेट नहीं हो रहा है, कौन सा इक्वेशन सेट करें? क्या लगता है? देख, सोनोमीटर मतलब वायर माने मीडियम, बराबर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ओए, वायर मतलब जो हमने वो 2 के बीच में रखा था और बाद में ऐसे करके छोड़ दिया था, उसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था वो कितना आ रहा था? NV/2L. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N is equal to 1. So V/2L. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अल्लाह, क्लियर हो रहा है? So V/2L will be the fundamental frequency. Fine, okay, right? So I can say that fundamental frequency पहले वाला is equal to V. अरे, fundamental frequency is V/2L. मतलब I can understand frequency is inversely proportional to L. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? That's good. That's a nice boy you are. Okay, so we have got frequency proportional to 1/L. Fine. Once when we have got this, I can say that f1
F1 जो है F1 it is proportional to 1 upon L1, F2 proportional to 1 upon L2, F3 proportional to 1 upon L3. So now I can say that F1 divided by F3 is 2 is equal to L2 by L1 because 1 upon L1 1 upon L2 होगा. समझा कि नहीं समझा? सबको क्लियर हो रहा है? हाँ, रेशियो ले लिया. That's what I meant. Fine. So F1 by F2. पक्का ना? हाँ. चलो. So we got this. Oh, F1 by F2. Here it is 1:2, so 1 by 2. 1 by 2. So I can say L2 is equal to L1 by 2. समझा? Oh, let's take the second ratio F1 divided by F3, L3 divided by L1. कैसे आया? Cause यहाँ पे we will be having 1 upon L1 upon 1 upon L3. L3 को क्यों ऊपर? L1 नीचे. समझे कि नहीं समझे? तेरे नैना what will be here? 1:3. 1 by 3 we have got L3 is equal to L1 by 3. समझे कि नहीं समझे? Fine, clear, put out. भाई, I saw something so amazing right now. Nice, No, you did. चलो anyways, ये पता चला. ओए, L1 plus L2 plus L3 आखा लेंथ हुआ कितना है? 110. So I can see that L1 plus the L2 plus the L3 is equal to 110. L1, this is 1. L1 by 2. L1 by 3. 11 समझे? 6 LCM 6L1 plus 3L1 plus अरे डाल यहाँ L1 से. So I'll be having 2L1 upon 6 is equal to 110. समझे? तो 6 हाथ 8 9 जब गया 11L1 upon 6 is equal to 11. So this is 10. So L1 is equal to 60 सेंटीमीटर मीटर है? सेंटीमीटर. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? L1 60 आया तो अपना L2 कितना आ गया? 30. So that implies L2 is equal to what? 60 divided by 2. 30. समझ पड़ा? Fine. And L3 is equal to 60 divided by 3. 1T. समझ पड़ा? 1T. समझ पड़ा ये? कोई डाउट इसके अंदर? चलो नेक्स्ट. A wire having a mass density of 0.05 gram per centimeter. સારું પછી જ કરીએ છો. જગ્યા નથી ને.